Alright guys, so in this video we'll be talking something about the basics of aerodynamics, basics of basically and how an airplane flies. So let's draw an airplane first of all. Let's say this is an airplane. So there are always four forces acting on an airplane. In the upward direction, the force is called lift. In this direction, it's called drag. This is called weight, and this is called thrust. Alright, now before going into each of these, I would like to tell you one important theorem, which is called Bernoulli's theorem. What it states is that in an ideal fluid, the sum of pressure energy and kinetic energy is constant. Now, ideal fluid is basically a fluid which is incompressible. And by the way, Bernoulli's theorem आपने पढ़ी होगी in your 11th and 12th if you took science. So I'll just go to the conclusion of this. So this basically concludes that your pressure is inversely proportional to your velocity. मतलब अगर आपका वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपको प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा. नाउ द फर्स्ट थिंग टू नोट ओवर हियर इज लेट्स गो टू द लिफ्ट एस्पेक्ट. फर्स्ट थिंग इज लिफ्ट. लिफ्ट आपका प्रोड्यूस होता है विंग से. विंग का इफ़ यू कट इट लाइक दिस, ऐसे आप विंग को काटते हो तो द शेप यू गेट इज़ एन एयरफॉयल विच लुक समथिंग लाइक दिस. अब एयरफॉयल लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो आपका हवा यहाँ से आ रही है, राइट. सो लेट्स से वन एयर मॉलिक्यूल गोज लाइक दिस, इस ऊपर से जा रहा है और एक नीचे से जा रहा है लाइक दिस. Now experimentally it is found that at this point over here, when these two particles meet over here, they meet at the same time, right? So यहाँ पे आप देख रहे हो जो मॉलिक्यूल A होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एंड यू नो दैट स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम. सो अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो मतलब वो ज़्यादा स्पीड से गया होगा, तो मतलब द वेलोसिटी ऑफ A is greater and the velocity of B is less. Now, if you apply your Bernoulli's theorem over here, your pressure is inversely proportional to your velocity. We find that यहाँ velocity ज़्यादा है तो यहाँ pressure कम होगा, और यहाँ velocity कम है तो pressure ज़्यादा होगा. Now if you see the whole picture, यहाँ नीचे से आपका pressure ज़्यादा है, मतलब there is some force acting from below the wing. Now this force is the actual force that creates lift. आपका एयरफॉयल के नीचे से एक फोर्स आ रहा है जो इसको ऊपर उठा रहा है. सो दैट इज़ बेसिकली योर लिफ्ट. नाउ गोइंग ऑन टू योर ड्रैग. ड्रैग इज़ बेसिकली एन योर रेजिस्टेंस टू एरोडायनामिक मूवमेंट. तो आपने विंडो से, अपनी चलती हुई कार के विंडो से हाथ बाहर निकाला होगा. सो यू फेल्ट दैट फोर्स ऑन योर हैंड. जितना स्पीड गाड़ी जा रही होगी उतना ज़्यादा फोर्स आपने एक्सपीरियंस किया होगा. सो द restrictive motion to airflow is basically your drag. तो drag आपका बहुत सारी चीज़ों से आता है, like for example the shape of your of any part of your airplane. like अगर आपका gear down है तो it will create more drag, right. spoilers जो होते हैं आपके wing पे, it is a drag inducing device, drag बढ़ाते हैं वो, right. so that's your drag. now comes your weight. weight तो बहुत आसान है. weight is basically जो भी आपका मास है, दैट ड्यू टू दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट टेंड्स टू कम डाउन, राइट. सो दैट इज़ अ वेट. थ्रस्ट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. थ्रस्ट आपका आता है इंजन से. नाउ नोट दैट इन एन अनएक्सेलरेटेड फ्लाइट योर लिफ्ट विल बी इक्वल टू योर वेट एंड योर थ्रस्ट विल बी इक्वल टू योर ड्रैग.